Yes, Santosh, we are live. I'm so sorry. So I Yeah, couldn't you can start. unmute myself. So good morning, all. This is Santosh Chaurasia from HDFC Security. I welcome you all on behalf of HDFC Security. Today we have, market outlook and understanding non-cyclical fund. So basically, how this non-cyclical fund is going to help you to build your portfolio and build your, your value to your portfolio. So we have Mohit Karkera from HDFC AMC today. So he will just explain you about this non-cyclical fund. So over to you, Mohit. One and all present on the call. And I would like to thank HDFC Securities for having me here. So today, as Santosh was saying, that we are going to discuss about markets, and we are going to discuss about non-cyclical fund. So first and foremost, we have come up with a new fund offer, and it is available from 23rd to 7th. So we are already at 26. So if anybody wants to subscribe, this fund is available till 7th of next month. So most importantly, this idea of this call is to basically make you understand about why we have launched this fund and what is the opportunity for us. So whenever a fund is being launched, we do take into consideration the opportunity available in the market, and also somewhere down the line, this fund is also launched taking into mind the requirements of the investor. Okay, so as the name suggests, non-cyclical. Okay, non-cyclical is something wherein the idea is to give you some kind of linearity or consistency in your portfolio. ठीक है, हमने जब देखा क्या हुआ है to investors आज, if I have to give you the data, in mutual funds we have a population of what, 140 crores in India, right? But mutual fund penetration is only at 3.5 crores. So we are roughly what, 3% penetration of the overall market. That is number one. So why is this happening? So bulk of the investment goes into real estate, gold, and FD. So these are the three major asset classes wherein people park their funds blindly. Now, why do people invest in this particular asset class? So the main reason for this is basically people don't want to risk their money. People want some kind of a consistency in their way, in their hard with their hard-earned money and investments. And when it comes to stock markets or mutual funds, the biggest problem is nobody can commit you uh, that there will be no volatility. Nobody can guarantee any amount of money, but still you see that mutual funds overall has really delivered in a very big way, and there are campaigns like mutual fund sahi hai and so on and so forth. So this idea of this particular fund is basically the volatility of the fund is will be quite lower than a Sensex or a Nifty. Okay, so ज्यादा से ज्यादा लोग हम गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने पैसे को लेके कोई चिंता पालना नहीं है. Nobody wants to stress about their hard-earned money, as it is that there is a lot of stress that a person has to grow to, that a person has to bear to earn money. And the idea is once the money is earned, then they don't want to do prayers to make their money grow. But the point is, if a person is just investing in this three asset class, so the returns that a person makes is very minimal, and the idea is the money doesn't grow. Okay, so it doesn't even beat the inflation return. And the whole idea of earning money, okay, or your journey towards wealth creation is to have a higher purchasing power. So today we are at 2023. The idea is whatever you do with your money, the idea should be like 5, 7 years down the line, your purchasing power should go higher.
But if you're only choosing those three asset classes, it really doesn't serve the purpose. So the idea of this particular fund, as the name suggests, HDFC's non-cyclical consumer fund. Non-cyclical means companies which doesn't have to go through the macro risk, right? मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से हमारी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोविड आ गया, वॉर हो गया, उससे कोई कंपनी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नाउ as you might have be seeing the first page of the presentation wherein there is a person having tea, there is a couple who are inside the theater, and then there are three people who are just watching a match over there. Now, as the picture suggests, so these are all things that we do on a daily basis. So even if you are doing well in life, you are going to consume a certain products to maintain your lifestyle. Or even if you're not doing well, there are certain products which you need to have, which you will come what may, right? So you will have your coffee, irrespective of how you're doing in life. So, and you will have a particular kind of spending, uh, which you will have to do in life in order to maintain your lifestyle, right? So the idea of this fund is, इसमें जो स्टॉक्स होंगे या जो बिजनेसेस हम सेलेक्ट करने वाले हैं, so those businesses are do not face any kind of risk when it comes to economy, राइट। सो ब्रिटानिया का जो ईपीएस ग्रोथ है वो उतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है कि इंटरेस्ट रेट्स क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ब्रिटानिया इज नॉट अ recommendation, it was just an example purpose. So if you look further, when we basically explore this particular fund ki kaun se stocks ये particular index में है and so on and so forth, so there are names like Britannia, there are names like Asian Paints, there's names like HUL, Nestle, ITC, Colgate. Now, these are all companies wherein even the quality of shareholders who enter into this company, they do come in for long term, and hence the volatility in this particular companies are far more lower. ठीक है, एंड ये जो कंपनीज के अर्निंग्स है वो बहुत ज्यादा विजिबल है, और इनकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है वो बहुत इनइलास्टिक है। मतलब कम वॉट में पीपल आर गोइंग टू कंज्यूम दैट प्रोडक्ट्स, एंड इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी ये कंपनीज लेती है, राइट। सो अगर इन्फ्लेशन 7% से ग्रो कर रहे हैं तो ये अपना प्राइसेस 12 से 15% से बढ़ा देते हैं, एंड ऑटोमेटिकली दे हैव दैट रेवेन्यू ग्रोथ। सो देर इज अ ग्रेट मेरिट ऑफ हैविंग दिस कंपनीज इन योर पोर्टफोलियो, वेर इन आज अगर हम देखें, जैसे हम स्लाइड्स में आगे जाएंगे, so we are at a cusp of something big happening within our country, right? So I'll just move to the next slide of why we have launched this fund. Uh, there are certain parameters, if I have to tell you, of why we have launched this fund. So as you see in the first slide, हमने 5 points दिए हैं. So one is India is at a inflection point. India's consumption is at an inflection point. Now there are certain comparisons what we have done. So today, India's per capita is near to $2,200. Okay. Now India's per capita is very low as compared to developed nations. Okay, so if you compare us with US, so over there the per capita is more than $60,000 or so. Okay, so they are like 30 times, 35 times higher than India. So the basic idea being that the wealth today, we are a 140 crore population. This number is going to grow higher. So India's per capita is going to go from $2,200 to $5,000 in next 7 years, 7 or 8 years, right? So when people are going to have money, okay, they are not going to save. They are not going to open demat accounts or mutual funds. That will come later. They are going to first improve their lifestyle. And when they improve their lifestyle, they are going to spend money. And when they are going to spend money, there will be a list or basket of companies who will benefit out of it. So as far as stock market perspective, the best companies to own are the defensive companies or defensive sectors. So FMCG is a defensive sector because it is a no-brainer to hold consumption companies in a portfolio, because इसकी जो earnings है वो grow होती है कम वॉट में।
Okay, and the valuations are also slightly different than other sectors because earnings में आपको certainty है, right? Demographic dividend, जैसे India is the youngest population in the world, so the average age अगर आप देखें 140 करोड़ के population में the average age is around 28 का age है, right? So that is one thing. So people, when a country is young, it is going to consume a lot of things. Okay, so there are two levers working for you. एक तो age जो है, the one, the age is on the lower side. Second, the people, the young population are also going to get employed, and hence they are also going to spend, right? So the third thing is premiumization. सो जैसे ही लोगों के पास जो है जिनका इनकम बढ़ता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट गोइंग टू स्पेंड ऑन समथिंग just which the masses adopt. Okay, so when a premium product is being consumed, okay, when a premiumization happens, so the biggest beneficiary of the premiumization is basically company earns a lot of profit margin from that particular product selling. Okay, and automatically the shareholder also benefits. Fourth point is formalization. So now we all know after after the inclusion of GST and demonetization, what has happened is a lot of unorganized sector or unorganized players have lost market share to organized players. And as far as shareholder perspective, as a stock market perspective, it is good that unorganized players are basically losing their market share, and automatically the listed players and organized players have started gaining market share. Right, so automatically the profit pool is also increasing. The fifth point is digitization. So as far as when we compare ourselves with US and China, still there is a large scope of digital spending which is yet to happen. Already the mobile penetration or the internet penetration has already happened. So it is just a matter of time that this is going to grow multi-manifolds. Like people are going to buy it through various different e-commerce website, and which indirectly will help a lot of consumer companies, right? So yeah, next slide. Yeah, so things will get a bit technical moving forward. There'll be a lot of data that I'll be sharing while doing the presentation. So please bear with it. I don't want you to get bored with this particular discussion. The idea is to basically enlighten you with a lot of data कि हमने क्यों launch किया है particular fund, right? So, if I have to talk about consumption as a sector, okay, now consumption basically accounts for roughly 60% of India's GDP. Okay, so if India's GDP is around say 280 lakh crores or 300 lakh crores, 60% of that comes from consumption, and the rest is from the investment and government spending which happens. So if you see, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा है, इसमें सिंपली ये बोला गया है कि जो कंजम्पशन है, ओके, इट ग्रोज फास्टर देन बेसिकली योर नॉमिनल जीडीपी. Now, what is nominal GDP? Nominal GDP is nothing but the growth of your real GDP, which today is 7% plus the inflation number. So FY 13 to 18, the nominal GDP was around 11.4%. Okay, and the same time the consumption figure was at 12.3%. So over here, the summary or the uh, crux of this particular bar chart is consumption does normally the consumption posted by a country in terms of GDP or growth is much higher than your nominal GDP. So the idea is if today India has a nominal GDP of 12 to 13%, your consumption will grow much higher than that. That is the basic point which we would want to make from this particular slide. See, on the right hand side, basically what we have done is private consumption breakdown by category. Okay, so if you compare ourselves with US, okay, so वहां पर आपको डेटा दिखा होगा FY12 and FY22. ठीक है, so basically there has been a 10 years comparison. So food wise में we used to basically spend $274, okay, per capita. Now this is per capita data.
Okay, now this is not a data that is being taken from the urban sector or what rich people follow. This is being taken as a per capita basis. So you can see there has been a growth, okay, in the food and beverage section, wherein we used to spend $274 and now it has increased to $421. Okay, but if you compare the same thing with US, they are 8 times ahead than us. Okay, they spend 8 times more on food, beverage, and tobacco compared to us. That is the kind of consumption story which we are talking about. And sooner or later, in a matter of say 5-10 years, we are only going to gravitate towards becoming a developed economy, and even the consumption story is going to move higher. ओके, तो यहाँ पर आप अगर देखें, जैसे मैंने कहा कि आज FY23 हमारा पर कैपिटा इज $2,200. So if you just move lower and if you just look into the total number, okay, the total spending done on the consumption per capita is 1296. So out of $2,200, around $1,300, that 1296 वाला जो number है is being spent on consumption. So that tells you around 60% of what you're going to earn is going to go on the consumption thing. And the same thing, अगर आप US को compare करें, their per capita is more than say 70,000 or $75,000, and उसमें से जो $50,000 है, they spend on to a very large extent. Just look at the restaurant and hotels number. ठीक है, आज यहाँ पर सिर्फ $18 स्पेंड हो रहा है, वर्सेस आप अगर यूएस का देखें इट इज $3,700. $3,700, you can just calculate into 80. So almost per capita consumption ही वहां पर कितना ज्यादा है compared to us. Okay. So yeah, so as I said, India is at a inflection point. When we say inflection point, there is a lot of research which has happened. कोई भी country जब 2000 से $5,000 के ब्रैकेट में होती है, तब स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स जो है वो बहुत अच्छा होता है. ओके, एंड सेम वे में जब 2000 से 5000 का डॉलर का इंक्रीज होता है, ऑटोमेटिकली द स्पेंडिंग एंड द पर कैपिटा कंजम्पशन जो है बहुत बढ़ जाता है. सो वी हैव डन अ कंपैरिजन विद चाइना. So wherein you can see there are 5 categories: food, clothing, cosmetics, jewelry, and household. इसमें क्या comparison किया है? The blue, the light blue, the sky blue color और the chart, उसमें ये बताया गया है कि 99 से 2005 तक जब per capita कम था, तो spending का जो growth था food में वो सिर्फ 16.9% का था. Okay, and the same got increased to 25.22%. Now there's a 9% increase, but the percentage change in increase is huge. अब यही सेम चीज आप ज्वेलरी में देखो. सो ज्वेलरी में जब आप $2,000 से कम आप कमा रहे थे चाइना में, एंड दिस आर ऑल फैक्ट्स, दिस इज नॉट अ स्टोरी, दिस इज एन एक्चुअल फैक्ट. सो 9.5% is was the growth faced by the jewelry sector, and that got increased to 37.5%. And you can say that is the same story with a clothing or a cosmetics or a home appliance kind of a thing. So बोलने की बात ये है कि आज हम $2,200 के फ्रेमवर्क में है, and by FY32 there are enough research houses who have told that at least we are going to reach that 5,000 mark, right? And this will automatically give a boost to the consumption sector. If I have to tell you about this financial year, तो आज हम FY24 पे है. अगर आप देखें the best performing sector, जैसे अपना सेंसेक्स निफ्टी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं. We have bank, we have IT, we have pharma, we have FMCG, we have autos. So the best performing sector for this financial year, हालांकि हमको 2 या 3 महीने ही हुए हैं ये financial year में, अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो FMCG is the second best performing sector in terms of price performance. So this has already been started factoring in when it comes to price. Okay, so that is one thing or one point which I wanted to make. Again, demographic dividend. So we have the youngest population today, and if you see, we are a population of what, 1.4 billion, which is 140 crores.
और हमारा एवरेज एज इज 28 crores. ओके, एंड द सेम थिंग अगर आप यूएस का एवरेज एज पकड़े तो इट इज 39 एंड चाइना इज 40. So they are comparatively a 30-35% older population compared to us. Okay, so we as a country are younger compared to them, and this will take its own time. The demographic dividend will take its own time to basically change. Okay, and one more point, जो dependency ratio है, ठीक है, क्या हुआ करता था, डिपेंडेंसी रेशियो आज से 50 साल पहले जो है वो इंडिया का बहुत हाई था. Okay, the income or earner in a family was comparatively low, and he need to take care of his children and his parents. Now the same thing is going to come down. Okay, तो आज अगर अब इसमें डेटा दिया हुआ है 64% था इंडिया का डिपेंडेंसी रेशियो, विच has got reduced to 47%. सो बोलने की बात ये है कि आने वाले टाइम में डिपेंडेंसी रेशियो जब कम होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स, lot of people are going to or shifting into being a nuclear family and so on and so forth. So automatically, when dependence ratio reduces, your spending also moves higher. There is also one very smart data, like hats off to our research team, which has been given in this particular slide. और ये बहुत बड़ा data है. I normally use it in all my sales call or pitches. So basically, in the next 10 years, आने वाले 10 सालों में, और by 2033, there is going to be 97 million people. When I say 97 million people, it is around 9.7 crores people are going to be added to workforce. मतलब अराउंड 10 करोड़ लोगों को नए जॉब्स मिलने वाले हैं. So just imagine in the next 10 years when there is going to be 10 crore people who get added to the working age population, automatically they will have a monthly income. And automatically, once people have monthly income, they will automatically improve consumption, and they would have maintained a certain lifestyle and a livelihood. So the next 10 years is really something which is very significant, and the idea is, if you want to benefit, this is basically a no-brainer story. So you can basically subscribe to this particular fund and get in touch with your relevant RMs, and we would be more than happy to take things forward, right? So yeah. Next slide. Now, this is also a very interesting slide, wherein India का story ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा आने वाला है. एंड दिस इज बेसिकली, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा डेटा दिया हुआ है. सो इफ यू यू कैन ऑल्सो चेक फॉर योर सेल्फ की ऑन विच ब्रैकेट दैट यू आर कमिंग इनटू. So premiumization. So when I say premiumization, very simply put, the idea of premiumization is there will be a lot of people who are going to consume premium or luxury goods for their livelihood. Okay, and the best part of luxury goods or premium products is the margin for those companies are very high, and automatically the revenue growth and profit and bottom line automatically moves in sync, right? So if you see 2021, okay, uh, जो 0 to $5,000 का जो bracket है per capita, okay, 38% of the household, okay, are into 0 to 5,000 वाला bracket. Okay, 38%. इसमें आप अगर देखेंगे ना, ऊपर में लिखा हुआ है 294 million. ओके, 294 मिलियन इज बेसिकली नंबर ऑफ हाउसहोल्ड. अब इसको जब मिलियन को, क्योंकि हम इंडियन क्रॉर्स की भाषा ज्यादा अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इंडिया में लगभग 30 करोड़ हाउसहोल्ड है. 140 करोड़ की हमारी आबादी है, बट जो हाउस होल्ड है या फैमिलीज है, ठीक है, इसका डेटा जो है वो 29.4 करोड़ का है. Just for the sake of simplicity, you can think that there are 30 crore households in India, and out of that, 38% of that household are only in that 0 to $5,000 dollar wala bracket. Okay, when I say $5,000, so it would be what, 5,000 into 80. Okay, that is less than 4 lakh rupees.
Okay, so you can say 38% of the population are in this particular bracket. Okay, and you can check for yourself. People who earn more than $35,000, okay, it is just 2% of the population. And if you, I just did a rough calculation, it is around people who, or a household which earns more than 35 lakhs is only 2%. Now just look at to the right hand side. 2031, जब हमारा per capita $2,200 से $5,200 होगा, ठीक है, 7% of the population will be above $35,000, ठीक है, and the beauty is जो 0 to 5,000 के bracket में रहेंगे वो सिर्फ 13% रहेंगे, और 46% of the people और roughly 50% of the people, मतलब 30, इसमें हाउस होल्ड वाला भी ग्रोथ दिख रहा है, मतलब 36 करोड़ हाउस होल्ड में से लगभग 50% जो लोग हैं वो $10,000 से $35,000 के ब्रैकेट में आ जाएंगे। और मेरे हिसाब से तभी रूपी भी आपका 90 रुपए या 100 रुपए क्रॉस हो गया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि $10,000 को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 लाख के ऊपर अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन will roughly have an income range of more than 10 lakh rupees. So you can imagine once people will have money, automatically the spending will go up. So it's a very interesting slide and very beautiful slide. It's been taken the sources from Morgan Stanley research. Now this is a very basic slide wherein आपको अभी का और आगे का जो पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में एक बहुत ही साधारण सा आदमी जो नॉर्मल कॉमन मैन का एक रिप्रेजेंट कर रहा है, और वही राइट हैंड साइड में थोड़ा सा फिरंग लुक के साथ ग्लेयर्स और ईयरफोन्स और जैकेट्स के साथ दिख रहा है। तो दिस इज बेसिकली पहले का और आज का रिप्रेजेंटेशन है, एंड इसमें शायद और भी ज्यादा इंक्लूजन होंगे मूविंग फॉरवर्ड। तो जिसमें कि आप देख सकते हैं फुटवेयर, मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन्स, ग्लेयर्स एंड ऑल्सो द एपरल। ओके, ये सारा चीज ऑटोमेटिकली कोई ना कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा, एंड देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ बेनिफिट which is going to be passed on. सो या जो डेटा हम आपको बता रहे थे कि प्रीमियमाइजेशन का बेनिफिट होता है और इंडिया चेंज हो रहा है, इसका एक्चुअल लास्ट 10 years में भी देयर हैज बीन अ ग्रोथ. इट इज नॉट दैट कि थिंग्स आर ओनली गोइंग टू चेंज नाउ एंड मूविंग फॉरवर्ड. Already there has been a change which we have witnessed in the past 10 years. So if you just check in for a detergent company, so there is a wheel, there is a rim, there is a sunlight, and there is a surf excel. Okay, now wheel is something which is used by the masses. Okay, so during 2011, 58% of our country used to consume the wheel product or a mass wala related product, and the market share of a premium product was only 17%. Okay, now fast forward 10 years, that market share from 17% has grew to 31%. So today people like to own premium products automatically, and the market share is only going to go higher, right? And इसमें सबसे ज्यादा जो market share कम हुआ है वो mass products का है. Okay, and इसमें बहुत ज्यादा companies को comparatively फायदा होता है. So if you want to be the beneficiary of this price increase of the story, automatically you need to own these companies. And if you own these companies, automatically, and it is frankly a no-brainer. Like people who are owning shares of a Colgate or a Britannia, and there's so many companies, or even for that matter, even if the market, you might have seen, even if the market tanks by 2.5%, a share of a HUL or a Colgate hardly comes down, right? Uh, so yeah, next slide. सो फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि बहुत सारा ये जीएसटी डिमोनेटाइजेशन एंड जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए थे, इसमें हुआ क्या है कि जो लोग प्राइस बेसिकली टैक्स नहीं भर के बिजनेस करते थे, उन लोगों का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा कम हुआ है, right? And there are players in the organized sector wherein the market share has improved to a big extent. So on the left hand side, you can see food may the market share of organized players have improved.
ओके, FY 15 और 20 का आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 2% का मार्केट शेयर हुआ करता था, वो 4% हो गया है। अपैरल में 18% हुआ करता था, एंड आज 30% ऑफ द पीपल मार्केट शेयर जो है वो ब्रांडेड अपैरल का है। फुटवेयर में अगेन देयर इज द सेम स्टोरी, राइट? पेंट almost 67%. But on the right hand side, there is still a large pool when it comes to consumer durable sector. इसमें आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा है। आप बिलीव नहीं करोगे, जो एयर कूलर्स है, एयर कूलर्स वाला जो मार्केट है, इसमें 70% जो है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास है मार्केट शेयर। तो आपने देखा होगा जो लिस्टेड एंटिटीज में मुझे लगता है सिम्फनी वगैरह है, जो एयर कूलर्स सेक्शन में है। नॉट अ रिकमेंडेशन, इट इज जस्ट टू बेसिकली मेक यू अंडरस्टैंड। So there is a huge opportunity when it comes to unorganized sector versus organized sector, and slowly the story is also unfolding towards organized sector. And as far as stock market or equity market perspective is concerned, it is good that the market share is being gained in the organized sector, right? सो या अगेन, जब आज हर घर में मोबाइल है, इंटरनेट है, दिस वाज नॉट द केस 10 years back, right? So if you want to just have a data about internet penetration in India, so this is also a very smart data. So access to internet in India 2020 में, मतलब कोविड के टाइम पे या कोविड से जस्ट पहले, इट वाज अराउंड 69 crores, ठीक है? 66 करोड़ से 69 करोड़ के रेंज में था। आज हमारे 100 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट पेनिट्रेशन है, ठीक है? 140 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोगों के पास एक्सेस टू इंटरनेट है, ठीक है? ऑनलाइन सर्विस यूजर्स जो है 2020 में जो है वो सिर्फ 28 करोड़ से या 31 करोड़ का था, ठीक है? आज अराउंड 75 करोड़ जो है, ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 5 साल में 2025, मतलब देयर इज जस्ट 2 more years टू बेसिकली बी देयर, बट यू कैन सी इंक्रीमेंटली ये भी चेंज हो रहा है। ऑनलाइन जो शॉपिंग हो रहा था 2020 में, सिर्फ 18 करोड़ लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, और 2025 तक वो नंबर 40 करोड़ का होने वाला है। धीरे धीरे this is just going to unfold, wherein getting a delivery at your home used to be perceived as such a premium and such a different thing, wherein आज आप देखते हैं जगह जगह पे it has been a norm that people have their products delivered at office and homes, etc. So if you compare us with US and China, uh, today e-commerce का जो penetration है टोटल रिटेल मार्केट में, वो सिर्फ 8% है, वर्सेस यूएस में इट इज 21%, एंड चाइना में इट इज इवन हायर देन यूएस, इट इज 25%। दैट इज द रीजन जो जोमेटो जैसी एक कंपनी है जो चाइना में भी चाइना में लिस्टेड है, सो दैट इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, राइट? फूड डिलीवरी सेक्शन में यूएस में भी उतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितने चाइना में है। सो इन चाइना इंटरनेट यूजर्स or online shoppers are at a much higher number than US also. So yeah, जब हम नॉन साइक्लिकल थीम के बारे में बात करते हैं, तो इसमें कौन से सब कैटेगरीज है और कौन से नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं पैकेज फूड्स, आपका होम एंड पर्सनल केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, क्यूएसआर, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर। तो इसमें सिर्फ 3 सेक्टर आपका नहीं आता है, वो है ऑटोमोबाइल, आपका रियल्टी सेक्टर और पावर सेक्टर। अब ये 3 सेक्टर साइक्लिकल हो गए। वो साइक्लिकल क्यों हो गए? क्योंकि इसमें जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। लाइक इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाने से जो हाउसिंग कंपनीज है इनका डिमांड ऊपर नीचे हो जाता है, राइट? ऑटोमोबाइल या रियल्टी या पावर जो है ये साइक्लिकल कंपनीज होते हैं, मतलब इकोनॉमी के ग्रोथ से बहुत ज्यादा इन लाइन होते हैं। एंड नॉन साइक्लिकल ऐसा होता है कि मतलब आपका जो डेली कंजम्पशन है वो तो होना ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है, ना कि बहुत अच्छा भी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी प्रमोशन हो गया तो आप जो नॉर्मल 2 कप पी रहे थे कॉफी, वो 6 कप कर लेंगे, राइट? सो देर इज अ सर्टन काइंड ऑफ सर्टनटी। मतलब मैं अगर बोलूंगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या किसी को अपने पैसे के साथ बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, so this is the best product to go with.
आप अगर देखेंगे अगर मार्केट टैंक भी हो जाएगा तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी ऑफ करेक्शन इज ऑल्सो लोअर, एंड इसका डेटा भी मैं आगे आपको शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, ये पोर्टफोलियो कैसा होगा या कैसा बनाएंगे हम, ये इसके चार पैरामीटर्स है। जो कोर पोर्टफोलियो होगा, 80% ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू बी नॉन साइक्लिकल स्टोरी। मल्टी कैप स्ट्रेटेजी है, मतलब इसमें स्मॉल मिड और लार्ज कैप ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो फंड मैनेजर को कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं है कि उसको लार्ज कैप से चूज करना है, right? And it will focus on leaders, right? The idea is leaders जो होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट पूल का सबसे बड़ा हिस्सा लीडर्स के पास होता है। तो हमारा ये एक एंडेवर होगा या एफर्ट होगा कि हमारे पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा लीडर्स रहें। और एक सेक्युलर ग्रोथ और री रेटिंग। जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको प्रे करने की जरूरत नहीं है कि एचयूएल का प्रॉफिट क्या आने वाला है, या फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी का प्रॉफिट आने क्या आने वाला है। तो ये सारी कंपनीज जो है वो सेक्युलर ग्रोथ है। कम वर्ड में थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, सो इवन इफ इट इज अ वॉर लाइक सिचुएशन और अ कोविड लाइक सिचुएशन और एनी सिचुएशन, तो डिमांड फेस्ड फॉर दिस कंपनीज इन इलास्टिक, राइट? एंड हमारा एंडेवर रहेगा कि जो कंपनी सस्ते हैं या जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी का टर्न अराउंड होने वाला है और वैल्यूएशन का जो टर्न अराउंड होने वाला है, वही कंपनीज हम बेसिकली इसमें ऐड करेंगे। तो दिस इज द बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ये मुझे जो ये स्लाइड है वो सबसे ज्यादा पसंद है ये पूरे प्रेजेंटेशन में, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एक आपको बर्ड्स आई व्यू मिलता है। कि सबसे पहला चीज आपको ये बताना चाहूंगा, इंडिया का स्टॉक मार्केट का जो साइज है, आपने नीचे देखा होगा इंडिया टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो 283 लाख करोड़ का है। ठीक है, और ये जो है अपनी जीडीपी से मैच करता है। शायद इससे पहले भी हमने जो प्रेजेंटेशन किया होगा उसमें भी मैंने जिक्र किया हुआ है। तो बोलने की बात ये है, 283 लाख करोड़ में से 57 लाख करोड़ जो है वो ये सेक्टर को बिलोंग करता है सर। ठीक है, तो 20% ऑफ द इंडिया टोटल स्टॉक मार्केट इज दिस सेक्टर। ठीक है, अब इसमें 25 कंपनी लार्ज कैप है, 33 कंपनीज मिड कैप है और 250 कंपनी स्मॉल कैप है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं ओवरऑल जो है हमारे पास जो इसमें 40-50 कंपनीज होंगे, वो 309 कंपनीज जो है, ठीक है, उतना बड़ा यूनिवर्स है मुझे सेलेक्ट करने के लिए। मतलब 309 कंपनीज में से मेरे को 40 या 50 कंपनीज ढूंढने हैं जो इंडेक्स के रिटर्न को बीट करेगा, कंजम्पशन इंडेक्स के रिटर्न को बीट करेगा, और जो ये सेक्टर का जो कम से कम रिस्क से बेस्ट रिटर्न निकाल के देगा, राइट? एंड इट इज अ वेरी बिग यूनिवर्स। मतलब आप सोच सकते हैं कि 20% ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलरेडी दिस पर्टिकुलर सेक्टर, right? Now, a brief characteristics of this particular companies। हम सबको पता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो एफएमसीजी कंपनीज का होता है, क्योंकि एमएनसी ओन करते हैं, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा होता है कंपैरेटिवली। एंड सेक्टर्स की जो फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है, मतलब आप आरओई को ले लो, या जो उनको बहुत ज्यादा कैपिटल भी नहीं लगता ग्रो करने के लिए। अगर आप देखें तो उनको बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने के लिए पैसा भी नहीं लगता। उनके मार्जिन्स भी बहुत हाई होते हैं, अर्निंग्स ग्रोथ स्टेबल होता है। अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं, उसमें से बहुत बड़ा पार्ट वो डिविडेंड दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो अच्छा रहता है, राइट? रिस्क जो है वो काफी कम होता है, वॉलेटिलिटी कम होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें लीस्ट रहता है, राइट? और जनरली ऐसा देखते हैं सालों साल से लोगों को एक हैबिट हो जाता है, एंड वो एक ब्रांड के टुवर्ड्स लॉयल रहते हैं, राइट? वो कॉफी पीते हैं तो नेस्कैफे की पीता है, और जनरली वहां पर बहुत ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होता, राइट? सो स्टिकी डिमांड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिस आर ऑल बेसिक पॉइंट्स जो मैं कहना चाहूंगा। अब एक और चीज, आप अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये भी जानना है कि हिस्ट्री क्या कहती है ये पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में। तो हमने एक एनालिसिस किया लास्ट 12 फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, 8 में से 12 टाइम ये पर्टिकुलर सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 65% ऑफ द टाइम्स दिस हैज बीटन निफ्टी रिटर्न्स। ठीक है, अब उसमें से भी अगर आप देखेंगे
हमेशा वो टॉप 5 में रही है। ठीक है, 8 बार, 8 में से 12 बार टॉप 5 में रही है। सो दिस इज वन सेक्टर विच एन इन्वेस्टर कैन नॉट इग्नोर। ओके, एंड ये एक ऐसा चीज है ना, मतलब बहुत सारे फंड मैनेजर्स अपने नॉर्मल स्कीम में भी एफएमसीजी इसलिए ऐड करते हैं ताकि उनको एक तो लिक्विडिटी मिले और फंड का रिस्क कम हो जाता है। सो दिस इज अ मस्ट हैव एंड इज अ फंड मैनेजर फेवरेट एक्चुअली, अगर आप देखा जाए, या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनका पहला जो फॉर द फर्स्ट लव इज एफएमसीजी सेक्टर, right? And you might have heard about so many different stories of people making tons and tons of money out of this particular sector and stocks, राइट। सो अगेन डेटा जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि इसका जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत कम है कंपेयर टू निफ्टी। तो इसमें जो नीचे आप अगर आप देखेंगे एवरेज रोलिंग रिटर्न, ठीक है, 5 इयर्स में जो रोलिंग रिटर्न है निफ्टी 50 का वो 11% है। बट निफ्टी इंडिया कंजम्पशन जो है टीआरआई, टीआरआई का मतलब है टोटल रिटर्न इंडेक्स, उसका जो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन है 13.7 है। तो यू कैन सी इन 5 इयर्स एवरेज रोलिंग रिटर्न जो है वो बेसिकली कंजम्पशन जो इंडेक्स है वो निफ्टी 50 से बेटर है। सो बोलने की बात ये है, द की पॉइंट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज इसका वॉलेटिलिटी जो होगा, या इसमें जो शेयर वॉलेटिलिटी होगा वो निफ्टी 50 से कम होगा। ओके, एंड ये सेम चीज आपको स्टैंडर्ड डिविएशन से भी पता लगती है। लास्ट 3 साल में या लास्ट 5 साल का अगर आप देखें, मोर और लेस सेम रहा है। बट लास्ट 10 इयर्स का अगर आप देखें तो निफ्टी 50 का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 2.4 है, और निफ्टी इंडिया कंजम्पशन का 1.8 है। एंड बहुत हद तक जो मार्केट्स में दिग्गज है उनको पता भी है कि एफएमसीजी हैज गॉट इट्स ओन पोटेंशियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। एंड अगर लास्ट 10 इयर्स का रिटर्न भी देखें तो निफ्टी 50 को 0.5% से बीट किया हुआ है लास्ट 10 इयर्स में। 15 इयर्स में ऑलमोस्ट 1.5% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स ने कंपेयर टू निफ्टी 50, राइट। सो या अब आती है फंडामेंटल्स, जो बेंचमार्क का क्या हाईलाइट है, क्या वैल्यूएशन है, क्या वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा, बीटा बीटा जो होता है वो वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। ठीक है, तो निफ्टी का बीटा हमेशा 1 रहता है बिकॉज उससे ही कंपैरिजन होता है। तो आप देख सकते हैं कंजम्पशन का जो बीटा है वो 0.74 का है। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो कंजम्पशन इंडेक्स का 40 का है कंपेयर टू 21। ऑब्वियसली निफ्टी 50 से बहुत ज्यादा कंपैरेटिवली इट हैज गॉट अ रिच वैल्यूएशन। बट ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर आपको सर्टेनिटी मिलता है और सुकून मिलता है जब आप ये कंपनीज ओन करते हो, तो पीस हैज ओन इट्स ओन प्राइस ऑल्सो। एंड आपको कभी भी 20 या 25 के मल्टीपल में consumption index को trade होना, it is basically a misnomer, and to expect that this is going to trade below Nifty valuations is also something which is not possible, right? ऐसा होगा नहीं कि आप कैपिटल गुड्स को ज्यादा वैल्यूएशन दोगे और एफएमसीजी को कम दोगे, बिकॉज जो फंडामेंटल्स है या डायनामिक्स जो होते हैं इंडिया सेक्टर के, वो हिसाब से ही वैल्यूएशन भी मिलता है। एंड इन्वेस्टर का जो कंफर्ट है एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेके, वही चीज से आपका वैल्यूएशन भी डिसाइड होता है। रेस्ट एवरीथिंग इज मोर और लेस, प्राइस टू बुक भी थोड़ा इसमें ऊपर दिखता है बिकॉज ये कंपनीज का जो ओवरऑल नेटवर्थ है वो कंपैरेटिवली कम होता है। निफ्टी 50 में आप देखेंगे तो बहुत सारी कंपनीज जो है उसमें बैंक्स वगैरह भी है, तो ऑटोमेटिकली वहां पर प्राइस टू बुक श्रिंक हो जाता है। ओके, I'll move to the next slide. Again the same thing, जो ESG है ये बहुत ही पॉपुलर टर्म हो गया है, जो एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस जो ग्लोबल लेवल पे फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं। तो अगर आप देखेंगे एफएमसीजी का जो ESG का जो रेटिंग है वो भी बेटर है कंपेयर टू निफ्टी 50। ओके, या सो
this is the second last slide of this particular presentation. तो अगर आपको जानना है कि बेंचमार्क में कौन से सेक्टर्स को क्या एलोकेशन दिया हुआ है, तो बेंचमार्क में एफएमसीजी में 37% है, और ऑटोमोबाइल में 20% है, ड्यूरेबल्स में 16.5 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ आप देख सकते हैं। और अगर आपको कंपनीज के नाम चाहिए तो उससे ही आपको पता लग जाएगा कि ये सारे बहुत ही ज्यादा नामचीन कंपनीज है। So we have ITC, okay, which we all know is a very popular stock, which is into cigarettes. We have Bharti Airtel, again, the second largest telecom player, and it is almost a duopoly kind of a market. We have HUL, we have Asian Paints, we have Maruti, we have M&M, we have Titan, Nestle, Britannia, and Bajaj Auto. Now, these all companies, it is a treat to own basically, and not necessarily ये companies हमारे portfolio में होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे पास 309 कंपनी की वाइट लिस्ट है, वहां से हम चूज करेंगे जो कंपनीज हमको लगता है रिटर्न्स कंपैरेटिवली बेटर होंगे, और रिस्क जिसमें कंपैरेटिवली कम होगा, फंड मैनेजर्स विल चूज दैट कंपनी। मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कंपनी, ये जो फंड है वो कौन मैनेज करने वाला है, हु इज द फंड मैनेजर? So the name of the fund manager is Amit Sinha. Amit Sinha is basically our equity and senior equity analyst. And basically, if अगर हम इनका प्रोफाइल के बारे में बात करें, so he has got more than 18 years of experience, जिसमें से 15 years उन्होंने equity research में किया हुआ है, and 3 साल उन्होंने normal corporate role पे किया हुआ है, और 15 साल जो इन्होंने actually Macquarie Capital के लिए भी काम किया हुआ है, more than 10 years, and वहां पर ये consumer sectors के senior equity analyst थे। So he's a guy who knows inside out कौन से companies का dynamics क्या है, and he's an expert. And as far as his education qualification is concerned, he's a IIT Roorkee pass out, okay, and he's done his mechanical engineering, and he's also an MBA pass out from XLRI Jamshedpur. So these are basically his profile, and he is working with us since August 2020. So he's going to be our fund manager. So this is briefly about this particular fund. I believe ये fund बहुत ही ज़्यादा no brainer है, and I believe आपको सुनने में मजा आया हो, and looking forward कि आप लोग ये fund में invest करें. So this is from my side. Thanks for hearing me out, and if you've got any questions, I'll be more than happy to answer. Thank you. Over to Santosh ji. Thank you, Mohit. Huge opportunity to our customers. To our customers. So let's have a question, and just let me check if any question is there. Customers, if you have any questions, please go to question box and type your questions. And happy to answer. Mohit, we have one question. That most of the mutual fund having these good companies, like you have mentioned some of the companies like ITC, HUL, and other companies. So various other funds having these companies. So how this fund is going to treat differently in this fund basically? Right. So your question is, as it is, इतने सारे funds हैं available है markets में,
and ये सारे stocks already कोई ना कोई own करता है. What is the point of investing in this particular fund? See, the idea of this particular fund is you want to have a comparatively a safe portfolio and with a focused approach, and with a very high quality in mind, and wherein you don't want much volatility. A lot of people, they park their money in hedge fund and hybrid equity fund because they don't like the volatility given by the market. So the idea is our management thinks is there is a big opportunity, or आज के date में anybody who is entering in this particular sector, okay, compared to having a bouquet of different sectors, it is going to really help their portfolio wherein there is so many things happening. Unfortunately, ये सारा चीज बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं है, and it is not celebrated. $5,200 से $5,000 का the first sector which is going to benefit out of this is FMCG sector और consumption. Hence हमको लगता है कि ये अगर हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, and if somebody is entering now, he'll be able to capture the maximum out of this particular good thing which is going to happen. तो किसी को फोकस अप्रोच के साथ किसी को करना है, बहुत सारे आज भी अगर आप देखेंगे एलोकेशन है वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 3-4% ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन, बिकॉज आज की डेट में लोग फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप एंड मिड कैप वो अच्छा भी किया है, बट लोग बड़ा पैसा नहीं कि वो वॉलेटिलिटी उनको पसंद नहीं. तो हमारे हिसाब से हमको लगता है कि ये पर्टिकुलर फंड क्योंकि सेफ है तो इसमें डेफिनेटली पार्क किया जा सकता है, right? So basically, volatility in this sector is very less. Yeah, you mean to say. Right, right, and the opportunity is huge. Yeah. So great. So we have next question: how we can invest in this NFO through HDFC Security? So basically, you can visit www.hdfcsec.com, and then you can just visit mutual fund section, and there you can find uh, and there from there you can invest. So Mohit, we have no more further questions. So let's conclude the call. So thank you all for joining this call and giving us opportunity or valuable time of use to thank you everybody. We'll again come back with a different topic on regular basis. So thanks all. Thanks Mohit. Thank you. Thanks for hearing me out. Thank you so much. Have a good day. Bye.